हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके ओके, मैं अभी कर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद आप सभी को। सभी को नमस्कार। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज के सम्माननीय वक्ता माननीय अजय कुमार शर्मा जी, प्रिय विद्यार्थियों, प्रबुद्ध शोधार्थियों, सभी प्रतिभागियों एवं आयोजक मंडल के आदरणीय सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। विदुषी अरुंधति भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र, मैत्रेयी महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज यूएसए एवं प्राच्य विद्या अध्ययन एवं अनुसंधान परिषद भारत के सौजन्य से आयोजित अंतरराष्ट्रीय अंतः विषयी कार्यशाला शोध प्रवृत्ति के आज के इस सत्र में, अर्थात यह दूसरा सत्र है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के समय में शोध और ज्ञान की दुनिया अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तित हो रही है। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अध्ययन और अनुसंधान की प्रक्रिया को एक नई दिशा दी है। देखा जाए तो विशाल सूचनाओं का विश्लेषण करना हो, संदर्भों का संकलन करना हो और डेटा की व्याख्या, इन सब में एआई एक प्रभावी सहायक सिद्ध हो रहा है। किंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि तकनीकी का उपयोग सजगता और बौद्धिक ईमानदारी के साथ करें। तो आज का जो सत्र है इसी पे आधारित है, जिसमें हमारे परम मित्र माननीय अजय शर्मा जी व्याख्यान देंगे। एक छोटा सा भाव आप लोगों के सम्मुख व्यक्त कर रहा हूं कि ज्ञान की राह में एआई ने नई गति दिलाई है। ज्ञान की राह में एआई ने नई गति दिलाई है, शोध की दुनिया में इसने नई दिशा दिखलाई है। पर याद रहे, यह साधन है, साध्य नहीं ज्ञान का। विवेक से उपयोग हो तभी सार है विज्ञान का। विवेक से उपयोग हो तभी सार है विज्ञान का। तो एआई का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन बौद्धिक ईमानदारी और सजगता के साथ। चूंकि कार्यक्रम का अब हमें शुभारंभ करना है और हमारी भारतीय परंपरा रही है कि किसी भी ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हम मंगलाचरण से करते हैं। तो मैं मंगलाचरण के लिए, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा सुश्री छवि जी से कि वह आभासी मंच से मंगलमय उच्चारण के साथ मंगलाचरण के द्वारा इस कार्यशाला या आज की जो कार्यशाला का द्वितीय सत्र है उसका शुभारंभ करें। सर, सर्वेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापा निःशेषजाड्यापा निःशेषजाड्यापा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद छवि जी, मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए। मैं आपको अपने केंद्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे साथ हैं माननीय डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी, रिसोर्स पर्सन के रूप में जुड़ रहे हैं। आप एक ऐसे विद्वान हैं जिनका व्यक्तित्व सरलता, सौम्यता
और विद्वत्ता का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। वे न केवल एक प्रबुद्ध चिंतक हैं, अपितु निरंतर कुछ नया सीखने और सिखाने की अद्भुत जिज्ञासा भी उनमें सदैव दिखाई देती है। मुझे यह कहते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है कि कभी हम सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में साथ साथ अध्ययन करने का अवसर प्राप्त किए हैं। हम दोनों साथ में पढ़े हैं, हमारे बैचमेट रहे हैं, सहपाठी रहे हैं, और मैं उसी समय से उनके व्यक्तित्व की यह विशेषता स्पष्ट रूप से देख पाया कि वे निरंतर ज्ञान के नए आयामों को सीखने और साझा करने के लिए तत्पर रहते हैं। निसंदेह ऐसे विद्वान का मार्गदर्शन आज हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ बातें चूंकि हमारे मित्र रहे हैं, आपने उनके उद्बोधन से भी समझ ही लिया होगा। हम लोग साथ में कंप्यूटर की क्लासेस करने जाते थे। आज भी मुझे वो दिन याद है। बीए फाइनल ईयर का वो दौर था, फाइनल ईयर संभवतः, और हम जी। लोग काफी समय साथ में कुछ न कुछ नया सीखने के लिए जाते थे। और उसमें अजय जी का कोई मतलब उनकी कोई शानी नहीं थी। जिस तरह से वो सीखते थे और हमें भी बहुत कुछ सीखने को उनसे मिला है। तो मैं अगर बोलूं तो निश्चित तौर पे उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा, एक हमारी परंपरा है अपने केंद्र की, कि मैं इनके व्यक्तित्व से सुपरिचित कराने के लिए, इनका विधिवत स्वागत करने के लिए, औपचारिक स्वागत करने के लिए, मैं जो अपने केंद्र की प्रभारिणी है, एक तरह से जो टेक्निकल पार्ट है उन सभी चीज़ों को देख रही हैं, और ऐप डेवलपमेंट कमेटी की कन्वीनर हैं, ऐसी आदरणीय डॉक्टर वीना भुरियानी मैडम से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं, इनका स्वागत करें, और जो हमारे आज के वक्ता हैं उनके व्यक्तित्व से सभा को सुपरिचित कराएं। डॉक्टर वीना भुरियानी मैडम, ओवर टू यू। Thank you so much, Pramod sir. I hope I'm audible. यस Yes, मैम, ma'am. यस। Good evening, everyone. It is my privilege to extend a warm welcome to our distinguished speaker, Dr. Ajay Kumar Sharma ji, who will be delivering today's talk on a very relevant and thought-provoking topic, AI tools in academic research, methods, and ethical considerations. In the recent years, artificial intelligence has emerged as a transformative force across disciplines, and academic research is no exception. We have found AI in almost every phase of our life, whether it is writing small messages, designing posters, creating images, everything. So from these small things that we are doing almost daily, we can see that AI has also intervened into the research, right from the literature review and data analysis to citation management and writing assistance. AI tools are increasingly becoming an integral part of the research ecosystem. However, these powerful capabilities also raise an important question about their important and responsible use, transparency, academic integrity, and ethical considerations. Understanding both the opportunities and responsibilities associated with the AI in research is therefore essential for scholars, educators, and students alike. Today's session will help us explore how AI tools can effectively support different stages of the research process, while also encouraging us to reflect on the ethical boundaries and the best practices that should guide their use in academia. We are truly honored to have with us Dr. Ajay Kumar Sharma. He is Deputy Librarian in charge in Chena Bhavana Library and additional charge of Hindi Bhavana Library, Visva-Bharati Santiniketan. Prior to his selection in Visva-Bharati, he has worked as assistant librarian in Central Library of Mangalyatam University, Aligarh. He has also worked as project associate in the INDEST AICT Consortium of University of Human Resource and Development at Central Library of IIT Delhi. He has working experience of more than 18 years in the field of library and information sciences. He has participated in a large number of seminars, conferences, workshops at national and international level. He has delivered many lectures as invited speaker and resource person at conferences, workshops, pan India. Mr. Sharma has about 35 research publications in national and international reputed journals and conference proceedings.
He has been awarded the Global Eminent Academician Award 2023 by the VIJ Trust for his outstanding services in the library. I hope you will bring valuable expertise and insights into this emerging area. I'm very confident that today's talk will not only deepen our understanding about the AI-enabled research methodology, but will also encourage us to adopt these technologies responsibly. On behalf of Vidushi Arundhati Center for Indian Information Knowledge System, Metri College, I extend a very warm welcome to our esteemed speaker, Dr. Ajay Kumar Sharma ji. We are very grateful that you have been able to take time out and join us and share your knowledge. Thank you for being here, sir. We eagerly look forward to your enlightening talk. Over Thank to you. you. Thank you, Veena ma'am, for having a very nice introduction. So first of all, I would like to thank to the organizing committee of this workshop for inviting me to deliver my thought on the very recent topic of the artificial intelligence, as Madam and Dr. Singh sir have already briefly introduced about this topic, that this artificial intelligence is how emerging this the subject over all a specific field. That means we cannot imagine that how this artificial intelligence has captured us in the every subject domain. So we will be discussing about this artificial intelligence in the academic and the research field. So I would like to share my slide. So may I share? Pramod Yes, sir? sir. बिल्कुल सर. The slide is visual to all, sir? Yes, sir. Yes, sir. So now we will going to start our topic, artificial intelligence in academic research method and ethical consideration. So first of all, we have to understand what is artificial intelligence. Later on, we will understand the academic research, and even most of us have already a brief idea about the academic research. What is academic research? What are the process of academic research, and what are the different aspects involving in the academic research? So we will begin with the artificial intelligence. So artificial intelligence is a software that learn pattern from huge amount of data. So it can make prediction, generate things, understand and respond to, take action usually that need the human judgment. That means artificial intelligence क्या करता है कि जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, मतलब उसके उसके सिस्टम में जो डेटा दिया हुआ है उसी के बेस पे वो एनालाइज करके वो आपको रिजल्ट देता है. दैट मीन्स इट वर्क्स ऑन द डेटा, and that data is not the simple data, it has the huge amount of data which is all spreading all over on the globe, and it is accessing through the internet. In the other way, we can say artificial intelligence is technology that enables computer to learn from data or experience. As we learn, how we learn about our experiences. So the artificial intelligence is also learning from their data, what the data is available on the internet, that they learn from that and reason and understand the context. It has the ability to understand, it has the ability to make the judgment, prediction. Even he can perceive. That means artificial intelligence can see also, that can hear also, that can read also. That means what you are, even in the recent days, even when we are using the mobile phone, even artificial intelligence is also exist in our mobile phone. All of us, we know that the mobile phone is listening our conversation.
how they can listening. That because the artificial intelligence is already inbuilt in our mobile phones, so they can hear, they can see what we are doing every time, they can monitor, make decisions based on the prediction, sometimes even create new things, text, अजय images. सर, Yes, एक yes. निवेदन है, संभवतः आपकी ना स्लाइड पहले पेज पे ही रुकी हुई है। आप एक बार स्लाइड शो कर दीजिए ना, तो सब दिखने लगेगा स्क्रीन शेयरिंग में। संभवतः ऐसा हो रहा है। बाकी लोग कंफर्म करेंगे, क्या हो सकता है मेरी तरफ यहाँ टेक्निकल तो, ग्लिच। यहाँ स्लाइड मूव कर रहा है सर, वहां सेकंड स्लाइड पे नहीं है। नहीं, ये नो एक स्लाइड है नॉट मूविंग, नहीं हो रहा है। आप एक बार पूरा स्क्रीन करेंगे ना, हो जाए। हाँ ठीक है। और ऊपर से स्लाइड शो जो ऑप्शन आ रहा है वहां कर दीजिए, वो ठीक रहेगा। ऊपर में तीसरे चौथे नंबर पे आगे आगे। जी हाँ, जी ये जी, मैं ये देता कर हूँ। देंगे, बिल्कुल। अभी हो रहा है। अभी तो फिलहाल अभी फ्रॉम करेंट स्लाइड आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद होगा। नहीं नहीं, मैंने कर दिया है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, विदाउट स्लाइड स्लो, विदाउट ओके स्लाइड स्लो ही ठीक। चलाता हूँ। ओ, ठीक है। कोई बात नहीं। तो अभी तक मैंने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है। इवन वो अब हम लोगों की कन्वर्सेशन को सुन सकता है, वो देख सकता है, वो पढ़ सकता है। इवन दे कैन क्रिएट द टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक, इवन द प्रोग्रामिंग कोड दे कैन ऑल्सो क्रिएट। सो even we cannot expect what they cannot do in this present situation. तो एआई हमारे आसपास या हमारे जीवन में इतना ज्यादा फैल चुका है कि हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते हैं कि एआई क्या कर सकता है। अभी अभी रिसेंट मैंने 3-4 दिन पहले एक खबर देखी कि एआई ने क्या किया है कि एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया है कि जो कि खुद से एक नया एआई जनरेट कर रहा है। अगर हम लोग कुछ आई थिंक 9-10 साल या 15 साल पहले एक मूवी आई थी रोबोट, शायद आप लोगों ने देखा होगा। रोबोट में जिस तरह की परिकल्पना किया गया है ना, जस्ट वैसे ही सेम सिचुएशन अभी के समय में एआई के साथ होने वाला है। उसने क्या किया है, वो मॉडल एक सोशल नेटवर्किंग, जैसे आज हम लोग फेसबुक बनाते हैं, उसने एक सोशल नेटवर्किंग बनाया है, एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। इवन प्लेटफॉर्म को खुद से वो रेगुलेट कर रहा है। इवन दे हैव क्रिएटेड ए चैनल फॉर दैट चैनल हैज ऑटोमेटिकली मोनेटाइज बाय देम। even they have created their currency like the bitcoin, and they have stopped the human interference in their coin or their means asset. So मतलब आने वाले समय में एक ऐसा कन्फ्लिक्शन एराइज होगा कि माने ह्यूमन और एआई के बीच में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट एराइज होगा, जैसा कि उस मूवी में दिखाया गया है। सो अभी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एआई क्या कर सकता है। So what is the artificial intelligence? The term artificial intelligence refers to a family of computer systems that can replicate human reasoning in tasks, including organizing information, interpreting data and producing text और graphic. जैसा कि हमने बताया कि ये टोटली डेटा पे डिपेंड करता है, उसके पास क्या डेटा है, ह्यूमन एफर्ट को रेप्लिकेट करता है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और चीजों को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि या तो वो टेक्सचुअल हो सकता है, या इमेज हो सकता है, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इवन यू कैन क्रिएट द वीडियो, ऑडियो, और यू कैन क्रिएट द ग्राफिकल, anything you can create from the artificial intelligence. Though artificial intelligence seems to able to think, create and solve problems like human, it's important to realize that those programs are actually trained to identify pattern in vast amount of training data and report on that pattern. That means वो जो आपको जो रिजल्ट दे रहा है वो टोटली जो उनके पास डेटा अवेलेबल है उसके आधार पर ही दे रहा है। जैसे कि अगर हम कुछ केसेस में हम देखें कि अगर हम उसको एक आर्टिकल का सैंपल उसको दे करके, या फिर हम कोई उसको टॉपिक देते हैं और कहते हैं एक आर्टिकल लिखने के लिए, वो क्या करेगा कि कई सारे आर्टिकल को रीड करेगा, रीड करके वो उनके पैटर्न को समझेगा। उसके बाद आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड वो डेटा कलेक्ट करके और एक आर्टिकल लिख देगा। इवन आप अगर कहते हैं कि यू कैन प्रोवाइड द साइटेशन, इवन इनटेक्स साइटेशन एंड रेफरेंसेस, they can do accordingly to that, but you need to check whether they have given the factual or the actual references or not. Sometimes they use the bogus references, as because they are actually following the pattern. If they will not get the actual fact, अगर उनको एक्चुअल डेटा नहीं मिलेगा तो जिस पैटर्न पे उन्होंने डेटा को पढ़ा है
या जिस पैटर्न पे उन्होंने डेटा को देखा है उसी पैटर्न पे उस आपके दिए गए आर्टिकल को लिख देगा। इवन वो इनटेक साइटेशन भी दे देगा, जो सही पैटर्न है, आपने जिस पैटर्न में कहा है एपीए में, एमएलए में, शिकागो में, उसी पैटर्न में वो रेफरेंस को साइट करेगा। लेकिन क्या है कि वो जब उसको एक्चुअल डेटा नहीं मिलेगा उस रिलेटेड टू दैट आर्टिकल, वो फिर भी वो आर्टिकल लिख देगा और वो बोगस रेफरेंसेस दे देगा। तो इस केसेस में क्या होता है कि हम लोगों को चेक करना पड़ता है। आज ही का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग को हंसी आएगी कि सर ने जैसे एक पंपलेट बनाया था इसी वेबिनार को लेकर के, और उसमें एक तो ठीक था, मैंने हमारा जो फ्लायर आया था उसमें एक में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया। तो उन्होंने क्या हुआ कि वो जो फोटो दिया गया है हमारा फोटो, उसमें उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो क्रिएट किया है, दैट इमेज इज approximately similar but not the same image. They have created according to that by emerging something change. So जब मैंने उसको गौर से देखा तो मेरा फोटो नहीं था, मैं समझ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के थ्रू में बनाया गया है। अभी के समय में बनाया ही जा रहा है आर्टिफिशियल, by the using of artificial intelligence we are generating the flyer, brochure and many things like that. But you need to check, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं। आप अगर जब उसको एकेडमिक फील्ड में यूज करते हैं, जब हम राइटिंग क्रिएशन के लिए यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहली चीज होती है कि उसने क्या क्या रेफरेंसेस को यूज किया है, उसको हम लोग देखते हैं कि उसने सही रेफरेंसेस को यूज किया है कि नहीं। एंड एकेडमिक रिसर्च क्या है? एकेडमिक रिसर्च के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं। एकेडमिक रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड structured investigation conducted to over a new knowledge, verify existing theory or solve problem. It is usually carried out by scholar, student, scientists in university or research institution and follow scientific methods. What was that methods? There are different methods. That is the identify research problem, conduct literature review, formulate hypothesis. They may be collecting data, by analyzing data, draw conclusion, and lastly the publishing the finding. In short, you can say academic research is a careful and organized study conducted to increase knowledge or to solve problem by using these scientific systems or methods. So what is the key features of academic research? Key features will be the scientific, the academic research would be the scientific. That means it follows some organized steps, like they have the problem identification of problem, they will collect the data from the different sources, they will analyze, and after that they have a conclusion on that. The academic research should be the evidence based, not any hypothetical data they are using. They have the actual data, facts, or observation rather than the opinions. It has the objective. It has the replicability. Other researchers should also can do this research repeatedly. That means research is not the static process, it is continuing going on. That means after finishing of any research, another scholar can continue the another research. Like this, the research is not means it cannot be stopped. It is a further continuous process. And lastly, the peer reviewed, often checked by the expert before the publication. That means after the academic research, some reviewers are there to review your research work, whether it will be your thesis, whether it will be your research paper, whether it will be your dissertations. It should be reviewed by the before the publications. So they have the proper systems or proper that means the process to follow the academic researches. The output of the scholarly output of the any research activity is the scholarly communication, or we can say that the academic research is communicated through the scholarly communications. The communications have the different channels. Scholarly communication is a system and process by which scholarly research and works are created, evaluated, disseminated, and preserved. The system includes both formal means of communication, such as the publications in peer-reviewed journals, or the informal communications like the electronic listservs or any electronic medium that may be that through which we can communicate our scholarly researches. There are the different scholarly or research communications channels, like the research output we can
communicate through the academic journals by research articles, conference proceedings. We can also communicate through our research monographs, research reports, working paper, thesis and dissertations, patents and standards, and many more also. So artificial intelligence offer exciting opportunity to improve your research and make academic writing, editing, publishing and impact evaluation easier like the other. जैसे कि हम लोग एकेडमिक जैसे कि अभी हम लोग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं, उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकेडमिक रिसर्च में भी उनके प्रत्येक स्टेप में वो इन्वॉल्व हो चुका है. वो अभी हम देखेंगे कि एकेडमिक रिसर्च में किस तरह से और किस किस स्टेप में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें मदद कर सकता है. If we think about it carefully, we might see AI as just another tool in the researchers' growing digital collection. This lecture is meant to show the way in which AI may be integrated into many areas of research and publishing process, and what we should consider when choosing whether AI tools are best match for our individual practice. In the context of academic research communications, the definition of artificial intelligence is meant to highlight several things like artificial intelligence tool are restricted by the limitations of their development and training data. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि artificial intelligence totally based होता है उनके डेटा पे, उनके पास क्या डेटा है, वो क्या डेटा यूज करके और आपको रिजल्ट देंगे, टोटली उस पर ही डिपेंड करता है. तो उनका एक रेस्ट्रिक्शन है. और जैसे कि मैंने कहा कि अगर उसके बाहर भी आप अगर कुछ देते हैं तो दे विल क्रिएट बट बेस्ड ऑन दियर डेटा. Sometimes they will give the bogus references or the not suitable result. That on that cases you need to verify. All AI applications are necessarily reliant on vast set of data derived from previously published human authored content in order to be trained and to operate usually, and that is open a variety of legal and ethical questions with regard to the use of copyrighted materials. समटाइम क्या करता है एआई ऐसे कंटेंट को यूज करता है जो कि कॉपीराइटेड है. जब हम मैन्युअली किसी कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसका साइटेशन देते हैं, उसका रेफरेंस हम देते हैं ताकि वो प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सके. बट समटाइम्स व्हेन वी आर यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर आवर एकेडमिक राइटिंग्स, what they will do, they will catch the data from the copyrighted material and they will not provide the proper citations and the references. So on that cases there are very much legal considerations are there. Later on we will also discuss this, the legal or the ethical consideration on that. Understanding what data that AI tool have been trained on affect our understanding of those tools, individual limitations, bias and value to us as a researchers. Means AI टूल के पास किस तरह का डेटा है वो हमारे रिजल्ट को अफेक्टेड करता है. ऑन अफेक्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल्स, इंडिविजुअल लिमिटेशन, बायसनेस. जिस तरह का डेटा उनके पास अवेलेबल होगा, जनरली अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास में जनरली मोस्टली जो डेटा अवेलेबल है, अभी भी डेटा जो मोस्टली इंटरनेट पे अवेलेबल है, दैट आर most of data has been Western countries, they have the digital contents are there. So the result may be accordingly biased on that. What should I know about the AI tools? AI tools के बारे में हम क्या जानना चाहिए? The term AI is used to refer to a broad range of technology. Therefore, it's critical to know some of type of AI driven application in order to determine how they might influence your own work or seen by the community of practice. There are generative AI generative AI refers to tool that create new unique content. That content may be the textual contents, the video content, images content. There may be the programming code or some other code also you can create through this generative AI using predictive algorithm based on the format, subject matter, duration and the other characteristics that have been recognized as poetry in the training data. A generative AI tool may be able to compose a poem also. जनरेटिव एआई बेसिकली किसी भी चीज को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है. वो उससे हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं. जैसे कि कविता भी अगर हमें लिखना होगा तो कविता भी वो लिख देगा. अगर हम एक कंटेंट दे, उसको हम एक टॉपिक दे देते हैं कि इस टॉपिक पे कविता लिख के दे दीजिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट लैंग्वेज में, दे कैन क्रिएट.
So this type of AI is generally categorized as generative AI. AI assisted search engines, like the many search engine on the internet is available. Even the Google Scholar also, they are the AI assisted search engine. They can even they can retrieve the data, they can summarize, they can extract of the whole articles. They can do the many more things through these AI assisted search engines. The automation refer to the rule-based software and include tools like spelling and grammar checks. Some softwares are the automation software that that have the characteristics to even they can check your spelling of the writings. They can also correct your grammar mistakes also. Some of the software we can AI software we already aware about that. The name is the Grammarly. That is the spelling checkers, or you can say they can check your grammar, and they can correct your grammar mistakes. और एक टेक्निकल टीम का निवेदन है आपसे, उनके तरफ से आ रहा है। आपका स्क्रीन, आप जो है ना थोड़ा सा अपने स्क्रीन को एडजस्ट कर लीजिए आप। हाँ, थोड़ा सा अभी देखिए एकदम स्मार्ट से लग रहे हैं ना, वही निवेदन वो करना चाह रहे थे। थैंक यू सर। Okay, thank you. So here I am just giving you the AI examples which we are facing in our daily life. So here are concrete examples you would like to use or see around you. Chatbot and virtual assistants, like we have already heard. हम लोग यूज अक्सर करते हैं ग्रोक का, जेमिनी का, चैटबॉट का, क्लाउडी का, को पायलट का। ये सब हम virtual assistants के लिए, even we can create the anything through this AI tools. You can even using this software, आप बोल करके भी या फिर कुछ टाइप करके भी इनसे आप कुछ जो भी है जनरेट करा सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होता है AI जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि वो आपको रेकमेंड करते हैं। जैसे कि हमने महसूस किया है कि जब हम कोई मूवी देखते हैं या कभी हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो वो रेकमेंड करता है नेक्स्ट के लिए कि यू कैन ऑल्सो सी द नेक्स्ट। इवन क्या करता है कि वो इस तरह का एक रिकमेंडेशन देता है कि आप अगर इस तरह की मूवी देख रहे हैं या आप गाना ही देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो उससे रिलेटेड रिलेटेड गाना भी आपको सजेस्ट करता है कि आप ये भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे जैसे या प्राइम वीडियो पे आप कोई शो देखते हैं, तो जिस तरह का शो आप देखते हैं दे कैन एनालाइज यू, and according to the analysis they will recommend that you can you may also see this, you can also watch this movie, like that. So that type of AI is the recommendation based artificial intelligence. Some are the voice assistants and the real time translations, like the Google assistants also. The Siri, Alexa को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। Alexa फैन बंद कर दो, Alexa टीवी चालू कर दो। You can see this, the voice assistants artificial intelligence we have around us. Some of the artificial intelligence is the image or the video AI, like the mobile phone camera recognition or the auto enhance. Even in our mobile phone, there is a face unlock systems are there. They can recognize our faces, and they can judge that this the owner of this phone is this, and they can unlock the phone. So that type of image based artificial intelligence are there. Autonomous and semi-autonomous driving, the artificial intelligence is like the Tesla. You are using the driverless car. Even they can set and they can you can drive without the car driver. Even the artificial intelligence has touched also the healthcare and the medical field also. So AI, you can upload your X-ray on the even the your what you can say the WhatsApp. They can read the WhatsApp, can see your the ultrasound report or the X-ray report, and they can recommend what the suggestives you can take, what can in which type of problem you have by analyzing your X-ray or analyzing your CT scans. So healthcare fields are also using the artificial intelligence. The fraud detection and the finance also using the artificial intelligence. Your bank card blocked instantly when unusual purchase happens. So they have also set up in the banking sector or the financial sector that some of your
regular habits they are incorporated in that their banking system. If anybody just we have unusual on that pattern, the banking your ATM card or some the financial transaction will be stopped. The content creation, we are using this at a very large scale by for our academic researches, by generating our lectures notes, by generating for our class notes. AI writes news summaries, blog posts, social media captions. AI generate YouTube script, podcast outline. AI helps edit video, auto cuts, auto subtitle, enhance. Even in this time now, the people are using this the content creation AI tool very much, because they are creating they are generating the content over the video or audio, and they create the channels and monetize, and even they are earning from this use of artificial intelligence. So now this this was the actually the overall scenario of the artificial intelligence in our daily life surrounded, and we are just observing. But now we are going to discuss about the what are the artificial intelligence that can influence our research. So there are many more software which is we can use in our academic research fields, like the Illicit uses LLM. LLM is a large language models to find papers relevant to your topic by searching through papers and citation and extracting and summarizing the key information. Research Rabbit is also there. The connected papers is also there. Like the Research Rabbit connected papers focus on the relationship between research paper to find similar research. You can also use connected papers to get a visual overview of an academic field. Genius. Genius recommend academic articles and topic based on the paper you upload. Site can help develop research topics, find papers, and search citations. Even you cannot, you can see that by using this artificial intelligence, the scholar are just refining their even topic of the research area, and they can also use the artificial intelligence in the every step of the research academic writings. The artificial intelligence tool for the literature review. You have the many more software for your literature review, like for finding a research paper on a different topics, we can use the litmus, undermine, and for reading the research papers, Inego read, outread, and scholarly, writing literature review, paper pulp, Grammarly, and the overlap, data extraction from the page, size summary, evidence hunted, the size space, the data analysis, NVivo, Julius, and the Myra, managing references, the Mendeley, Jotero, and EndNote, the critical analysis of research paper, connected papers, site, research report. That means we can see that in every aspect of the academic writings, there are the various academic artificial intelligence through which we can get help for our research activity. For analyzing and summarizing, scholarship is there. What they can do, the summarize key points and claim of article into summary cards that researchers can read, share, and note. SciSpace is also multi-tool platform that offer search and discover of academic papers, but also allow users to upload PDF to search, summarize, and synthesize their content. SciSpace also offer tools to drafting and generating citations. Recall, summarize YouTube video and the PDF content. Even you can see they can also watch the YouTube for you. If you want a summary of any video over the YouTube, you just provide a link of that, and they can the artificial intelligence will watch a whole video for you, and they can give the summary of that video.
You just provide the content and the artificial intelligence generate an article, generate a total PowerPoint slide for you. So you can imagine how they can involve for the academic writings. For creation of any the scholarly articles or the academic research articles, we generally use the chat GPT. They have the different version. I think presently the chat GPT 5 version, fifth version is there. So AI powered chat GPT is AI powered chatbot developed by the company OpenAI, can be used for a variety of tasks including authoring, summarizing content, searching the open web, and the many more. Because of the unknown nature of the underlying data and the known personality, propor- propensity for hallucination, non-factual data and citations produced by this and the other chatbot, you should always look up claims and sources to verify their credibility. I already told you about that. That by creation of any research article by using this artificial intelligence is not always will be the wisest, because they will sometimes they will use the bogus references. They will create, or they can generate the content by using some means the fabricated data, you can say, or the hallucinations they will give you. They will not provide the actual data, but they will create the articles, full articles events. But that on that cases you need to verify whether they have referred the actual sources or not. The cloud AI powered chatbot trained by Anthroponic using constitutional AI. Anthroponic states that the tool was developed to be more safe, accurate, and secure than some other LLM. In addition to writing tasks, Cloud can be used in developmental stage of research for brainstorming of and the data analysis. Cloud, that means the cloud is the more powerful over to the chat GPTs, because they are using some other level of LLM. LLM is the large language model. Actually, that is the method of their working of the any artificial intelligence, basically based on that LLM. The Google Gemini is also to use for creation of the research articles. The Magic Slide app is also used for this creation. This slide has been given for the research scholar to which artificial intelligence they will use at which stage. That means for the answering research paper writing, they can use the grammar and the typo checking by through the paper pearl. The data extraction and the literature review, they can use the size space. For the finding citations for your research paper, they can use the liner. So they have given the different type of artificial intelligence used at the different step of the creation of the research articles. So what are the advantages of the AI tools? AI tools basically they can speed up your research activity. They can replicate the human effort by using the similar kind of works in a very speedy manner. They can analyze the data uh, and they can process quickly. Even they have the large data set and they will analyze very quickly. They can also use in your literature review, finding relevant papers. They can summarize also. Automated writing you can uh, do by this artificial intelligence. So that means they can use, you will have a time efficiency by using this artificial intelligence. You can improve the accuracy. That means the artificial intelligence will provide the accuracy, more accuracy than the human can make spelling mistakes, but the artificial intelligence is actually have the very less mistakes. So now what we have discussed about the artificial intelligence, that means we can visualize that the artificial intelligence has captured every aspect of the academic writings, even beyond the academic writings in our daily life. They can also
we see the involvement of artificial intelligence. So in the case of the academic writings, there are some aspects like the copyrightability of AI generated outputs. So almost universal consensus, that means mostly US or EU and the most of the countries, purely AI generated content have no copyrightability. That means if you have created an article through the using of the any artificial intelligence, content may not be copyrightable, because artificial intelligence is not the credibility have the author. Reason why the copyright requires human authorship. You can use human AI hybrid works. Sometimes copyright only protect the human authored element. That means copyright, what they do, the copyright protect only the human authored content, not the artificial intelligence the creations. So we cannot copyright any material or any content which has been created by the copyright. So what are the ethical consideration behind that the content which has been generated by the artificial intelligence? This can be categorized into core area with recommendations based on the principle from organizations like COP, UNESCO, and the various academic publishers. The transparency and disclosure. AI tool can generate content, analyze data, or always disclose AI uses in methods assisting in writing, but failing to disclose their huge sections or the acknowledgement specifying can mislead readers about the human effort, the tools. That means the transparency and disclosure should be the ethical considerations part of the any AI generated contents. What the content you have generated through the help of the any artificial intelligence, that transparency should be there. That means for if you are using any artificial intelligence in writing your research paper or the thesis, it should be mentioned, the methods should be mentioned in your methodology, or sometime it can also mention in the acknowledgement part of your research paper, that which artificial intelligence you have used, what are their prompts, when you have that means data even also has, you need to mention. So there are different type of ethical considerations like the accountability and human oversight, bias and fairness, the plagiarism and academic integrity. Using AI to generate text without modification can constitute plagiarism if presented as an original work, undermining scholarly honesty. That means any content which has been created by using this artificial intelligence, they have fall under the plagiarism. Even in India also, even the some university are different university are using their different guidelines at what percentage of the AI generated content in the case of thesis or in the case of research paper they are accepting. Generally most of the universities are accepting 15 to 20% of the AI generated content in the thesis or in the research papers. So if more than that will appear in your research work, the content may be sent for the revision or may be retracted from the published research papers. So data privacy and the confidentiality, authorship and ownership, broader spatial impacts. Authorship and ownership is also the important ethical consideration in the artificial intelligence context. As I told you that the research paper or the article or the thesis you cannot generate through the artificial intelligence, because artificial intelligence don't have any credibility about the authors. Means they can not behave like an authors. So even they cannot means or any copyright or the any academic writings need to be any human author in intervention, that we can say. So
these are the actually the overall about the artificial intelligence of involvement in the academic writings, and also I have given snaps of overview of what the artificial intelligence influencing us around surrounding our. So if you have any questions on that, please feel free to ask. So this is. Hello. Hello. Yes. Thank you, Dr. Ajay Kumar Sharma. The session is open for questions now. Do we have any questions from the participants? Please write your questions on the chat box so that I can take it one by one. आप लोग हैंड रेज करके डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, उन्हें अनम्यूट कर दिया जाएगा टेक्निकल टीम के द्वारा। हाँ ठीक है। Two participants have raised their hands. ओके ओके। Yes. Yes, please. I'll take one of them. One of them is written in the chat box. It is by Om. He's saying that today we create devices like mobile phones to communicate and control technology, but the people described in the Mahabharata may not have depended on external devices. Through mantras, knowledge, and deep consciousness, it is possible that they use the power of mind itself, almost like having a chipset within their own awareness. So, what do you think about this, sir? Actually, what the data we provide, you have referred the time period of the Mahabharata. If the whole content is available on the internet, that AI can that restructure that. So AI only works on the data what we have, what they have available on their side. Okay, Yes. the next question that we have is from Cyril Thomas. He's asking, can you put some light on agentic AI and research? Sorry, what, ma'am? Agentic AI. Agentic AI. No, ma'am, I don't hear about that. Sorry for that. Yeah, it is, I think, a very technical question. Yes. See, agentic AI is not to do with about, it's not about a simple AI tool. It is an advanced AI topic. So I Yeah, think because this should the not be AI, covered in this the AI session. Yeah, topic is very burning topic exactly. nowadays. Day by day, it's growing, and the advancement is going on. Yeah, yeah. There's another question from Dr. Saranya. She's asking, should AI generated content be acknowledged in academic publications? Yes, as I told you that the if you have used any artificial intelligence for creation of your any research work, that should be properly mentioned in your methodology part, or the acknowledgement part. Otherwise, if you don't mention in your research paper, that paper later on may be the retracted from any platform. That In should be. fact, in fact, I would agree with you, sir. And these days, most of the journal papers are themselves asking the participants to mention how much AI has been used. So Yes, they yes, have a yes. certain limit below which the AI is allowed. Otherwise, if your AI usage is going beyond that limit, 10%, 15%, whatever is Yes, ma'am. the Yes, ma'am. Most of cutoff of the journal. they have the different criteria. Some are Yes, yes. using the following 10 to 15%. Some are up to Exactly. 30% they are using. So Yeah. depending on their decisions or the guidelines, they are accepting the things. Next question is by Shraddha Verma. She's asking, since AI is available to everyone today, how could we make our own idea unique using AI? You can make an unique ideas because AI will help you. AI will help you to generate new idea, but you that means that new idea or that content should be need to be an human intervention. You have to you have to give the prompt what they will generate. Otherwise, they will not automatically generating the things. We are giving the prompt to write an article on this topic, or write, and you can suppose you are creating any new image which is not exist in the you can say in the internet.
you are just creating a totally new image. So you need to put a command or prompt over that I want a picture or draw a picture using this and of the playground. So they will generate a new things. They will generate a new concept for you, but you need to give the prompt. So there need to, that means the human intervention is required. They will not automatically generate. But nowadays, I also told you at the very beginning that the artificial intelligence is has developing at this level of stage that they are they are generating new model itself. Even also they have, as I told, that the artificial intelligence has generated a social networking platform. Even they have generated a new currency like the bitcoins, and they restricted the human interference there. They are the humans are not they are restricted to use their money to the humans. So there later on, right now it is not possible, but at some point of time there may be a very critical timing for the confliction will be arise among the human and the artificial intelligence. As I have also given the example of the movie Robot. In the that movie, that the robot is automatically generating the new robots, and they have created a new team of the you can say a large number of robot by fighting with the human. So this situation may arise, but right now it is not possible. If we will provide a command to generate the artificial intelligence, will create that only. The next question is by Dr. Bisu. The question is there any AI tool for statistical analysis? Yes, many more. The our software is there. The viewer is also there. Many more statistical tools are there. Okay. Next question is from Prem. The question is, these tools are free or paid versions for data analysis, this data Yes, analysis tools? some tools are free of cost and some tools are paid. You need to check. At the initial level, they will use, but if you analyze a very big amount of data, they will need some sort of the स्क्रीनशॉट की subscription. कोई नहीं कोई Yeah. Even the many more university, they are प्रतिभागी अपने subscribing आप some को statistical tools. So if you are belonging to the any university, they can you can use through that. The next question is, review of literature can be done by AI tools. Yes. I have given the example of that. You can also even the every step of the research work you can do with your artificial intelligence. But you need to mention in your the methodology part or somewhere in the acknowledgement part that you have used these artificial intelligence tools by using this and by using this command, by using this prompt on that day, so that the reviewer can verify. Yeah. Participants are requesting that if you could share your PPT with them, it will be very nice. Yes, surely. I will share to you the Dr. Singh sir. Next question is by Rudrakshi. She's asking, how can AI be used in preserving or analyzing the Vedas and Upanishads without misinterpreting their meaning? Misinterpreting how we can say without giving the taking the result from that. Actually, if the Veda is if we provide the Vedas to the artificial intelligence, the soft copy of that, they will analyze, and what the question we will ask based on that, they will give the answer on that. You need to verify, as I told you, that the what you will ask from the artificial intelligence, it is not possible every time they will give the exact information. If they don't have the data about your questions, they will give the answer, but they will give the side by side, they will give the bogus references. So you need to, every time you need to verify. Yes, sir. Next question is by Carrie Bell, and the question is, what are the best ways to ensure AI generated content is plagiarism free? Plagiarism free. Yeah. Actually, plagiarism and the artificial AI generated content is totally different. That
what is the plagiarism? Plagiarism is the content what you are, or the any concept what we are taking from the other author or the other sources, that need to be properly acknowledged. If you are Yes. not acknowledging that content what we have taken from the other, that will fall under the plagiarism. And the AI generated content, we can create the content that need to be mentioned in the methodology part. This is Yes, the sir. thing. Yeah. Next question is, if the AI generated percentage is more than 25%, then what to do for reducing the plagiarism? This question is by Prem. I think sir has already answered that plagiarism and AI is completely different. So Yes. they need to be handled in a different way. Even ma'am, even when we are checking the content on the drill bit, as UGC has given that software to check the material. So they have the different column for the AI generated content and the plagiarism content. They have different column on that. That the AI generated content may be the 80% and the plagiarism will be the 5%. So they have the different criteria for that. Exactly. Then another question is, can we analyze AI's limitation in interpretive disciplines like Sanskrit studies? Use of AI in Sanskrit studies. Yes, I think yes, ma'am. If the content is available on their part, they can analyze. Yeah. It's because they can nowadays they can also read the regional languages, even Sanskrit, Hindi, Bangla, the Tamil, and the other regional language they can also read. So they can analyze, I think. Yeah. Then the next question is by Sakshi Tripathi. How much can we trust AI tools to remain neutral in academic research, considering that the data they are trained on may contain biases? Yes, as I told that there is biasness. What the result they will provide to us, that need to be verified every time. As because I told you that the most of the online data is available based on the Western data. Okay, Western country have maximum data on the internet. So if you ask anything, they will provide the result based on their data availability. So every time you need to check. There may be every time biasness according to the data. What the data have, accordingly they will give the result. So need to check, verify. There are certain questions again repeatedly being asked about plagiarism and AI, so that I'm skipping because we have already answered that. And there's another question by Tanya. Sir, how does AI use our ideas and develop further on that idea and later gets identified as AI generated content? I usually ask chatbot regarding the credibility of my idea in my field. AI cannot use your idea. AI, what I told you, that the you give, when you are giving the prompt, that prompt you are giving is your idea. That means you are giving your idea to the artificial intelligence for creation of any new things. They are not using, but you are giving. This is the different things on that. So they automatically they are not using your idea, but you are giving to create new things. So if you Exactly. don't give the command, they will not create any idea or any new content on that. Exactly. The command is by the user and the tool can only Yes. refine Yeah, it. Keep command is totally based. refining. Command is totally it is based by the user. If they will Yeah. even they will give the wrong command, they will not generate. Yeah. Then this question, sir, is it ethical to use AI tools for writing parts of research paper? This is by Muskan Kumari. Ethical, that I already discussed. Ethical part, some ethical parts are also there. Ethical means we can say the use of this artificial intelligence they are using. Even they are writing, they are using in the research paper. They are using this artificial intelligence in the thesis writing. But that need to be acknowledged. Yeah. Ethical part is also there on that. Always Oh, don't hide the things what you are using. If you are using any tools, these artificial intelligence are tools.
You can use this artificial intelligence as a tool, not you can generate the whole things by this artificial intelligence. Yes. Next question is by Mansi. She's asking, as per my knowledge, there are no such AI tools for Sanskrit. Ajay, I told that I don't have any idea about that, but if the literature is available on the Sanskrit to them, they can, based on their data, they can analyze. If the Sanskrit literature is not there, then AI will not work on that. In fact, one of the participant has already answered a question that all AI tools are nicely working on Sanskrit as well. Yeah. And Pramod If sir the can data, probably guide on yeah, this. Actually, नहीं नहीं, यहाँ मैं एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा। अजय सर ने बहुत बढ़िया बताया, लिटरेचर जिसका अवेलेबल है उसका एआई उस पर बहुत बढ़िया काम करता है। संस्कृत के साथ समस्या क्या है कि अभी उसका जो डिजिटाइज स्वरूप है बहुत कम हो पाया है। तो क्या करता है एआई ना, आपको कभी निराश नहीं करता। उसकी सबसे अच्छी बात यही है, आप कुछ भी उसको बोलो कर देगा। आप बोलो संस्कृत के इस पे लेख दे दो, वो बना के दे देगा। कालिदास पे आपने मांगा, उसने वो क्या करेगा, कालिदास के श्लोक अपने आप जनरेट कर देगा, यद्यपि वो कालिदास ने लिखा ही नहीं होगा। लिखा अगर ही नहीं। कालिदास वही मैंने बोला सर कि वो बोगस भी कंटेंट क्रिएट करता है। आपको हर समय हर स्टेप पे आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बल्कि अगर कालिदास इस समय होते तो जरूर सोचते कि काश मैं ये लिखा होता। वो बढ़िया बढ़िया लिख देगा, लेकिन उसका कालिदास से लेना देना नहीं। तो अभी थोड़ा सा संस्कृत वाले जो बच्चे हैं, संस्कृत के जो स्कॉलर्स हैं, और विशेष तौर से इंडियन लैंग्वेजेस जिनके डेटाबेस नहीं है, उन्हें एआई के यूज में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। पूरी पारदर्शिता तो होनी चाहिए। मुझे लगता है इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं और ये सत्र बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं बीना मैम से निवेदन करूंगा कि प्रश्नोत्तर सबसे ले लें, प्रश्न ले लें, और हम लोग अजय सर को भेज देंगे, उनके उत्तर भी प्रतिभागियों को दे देंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना कि हर किसी के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है। हाँ बिल्कुल। Right. In fact, Ajay sir has shared his email ID on this last slide. So whoever has more questions can probably mail it to him. Yes, And I he have can shared answer. my mobile number also there. Anybody can ask directly over also. Yeah. So thank you so much, sir. I'll just like to summarize this session that AI tools should be working as facilitator. You cannot completely depend on whatever AI is serving you. Don't take it as it is. Verify all the contents, and there are certain ethical considerations with AI tools, whether in whatever aspect of research they are being used. And those considerations are that the transparency, the disclosure needs to be maintained. There are issues, ethical considerations of plagiarism, authorship, and ownership. So I thank you, sir, for a wonderful session, and thank you all the participants for the insightful and great interaction you have had. Over to you, Pramod, sir. थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से मॉडरेट किया सत्र को। सर का व्याख्यान तो बहुत अच्छा रहा ही, और जैसे कि प्रश्न आया, वो मैंने देखा इतने सारे प्रश्न हैं और उनके उत्तर भी। सबसे अच्छी बात है, प्रतिभागी जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। उनमें से तमाम ऐसे प्रश्न वो अपने स्तर से भी देने का प्रयास कर रहे थे, और ये अच्छी बात है, क्योंकि रिसोर्स पर्सन तो चलो वो अपना, उनकी विशेषज्ञता होती है। आप भी ट्राई करते हैं, और जैसे उन्होंने संस्कृत वाले का उत्तर दिया वो बहुत बढ़िया उत्तर है। बाकी मैं फिर भी यही निवेदन करूंगा, शुरुआत में ही मैंने कहा था कि एआई बहुत बढ़िया है, बस उसको बौद्धिक विमर्श में लाने से पहले अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो ये देखना होगा कि आगे कोई समस्या ना आए। वो अभी तो कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं आया है कि प्लेजरिज्म के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए प्लेजरिज्म 2018 में आया, रूल्स जो है उसके पहले के जो लेख थे उन पे भी वो लागू हुआ। तमाम लोगों के आर्टिकल हटाए गए, प्रोफेसर बने हुए थे उनको डिमोट करके एसोसिएट कर दिया। मतलब कुछ कुछ चीजें होती हैं। तो अभी अगर आप कुछ कर रहे हैं, पढ़ने के लिए कोई समस्या नहीं, खूब पढ़िए। एआई का यूज होना बहुत जरूरी है, इस समय आप पिछड़ जाएंगे। लेकिन ये सोचिए कि मैं जल्दबाजी में करूं कि पेपर जहां साल भर में एक आ रहा था, आप 4-5 पब्लिश करने के चक्कर में एआई से बना ले। नहीं, उसको पढ़िए, कंटेंट बनाइए, उसको मिलाइए और अच्छे ढंग से अपनी भाषा में और तमाम तरह से परिष्कृत करके नया स्वरूप दीजिए। बहुत जरूरी है, स्वरूप ही नहीं, सब कुछ बदलना होगा। एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद अजय शर्मा जी। एक परंपरा रही है धन्यवाद ज्ञापन की, वो मुझे नहीं करना है, हेमलता मैडम को करना है, मैं उन्हें बुलाऊंगा। उससे पहले प्रतिभागियों को निवेदन करूंगा, इस समय सारे आप सभी रिसोर्स पर्सन हो गए हैं। मतलब यह है कि सारे लोग अपने वीडियो ऑन कर लें, ताकि जो हमारी टेक्निकल टीम है वो इसको अच्छे ढंग से एक फोटोग्राफ ले सके। और
पहले से निवेदन है कि अभी आप लोग अभी अटेंडेंस लिंक चैट बॉक्स में फ्लोट होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, यही स्क्रीनशॉट वहां अपलोड करना है, अपने आप को पिन करना है, और जब आप अपलोड करेंगे तो उसमें उसको अच्छे ढंग से अपलोड कर दीजिएगा। उसमें कोई लिमिट नहीं है, ना तो एमबी की कोई लिमिटेशन है, ना किसी तरह की है, तो आप उसको जरूर करें। एक सूचना और है, कल का जो व्याख्यान है वो स्टैटिकल टूल्स पे होना है, और अच्छी बात यह है कि शांति निकेतन से ही हमारे साथ जो कल के स्पीकर हैं वो जुड़ेंगे, उनका ये बहुत बढ़िया विशेषज्ञता क्षेत्र है। उन्होंने एक आग्रह किया था कि सभी प्रतिभागी कल जब भी जुड़े तो लैपटॉप के द्वारा जुड़े, और वो कुछ कुछ आप देखेंगे ग्रुप में कोई कोई लिंक है उसको भेजेंगे, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप रिसर्च में अच्छे ढंग से यूज कर पाए। कल का सेशन जैसे आज का बहुत ही उपयोगी रहा है, कल का निश्चित तौर पे बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि आपके रिसर्च में काम आएगा। तीसरा जो निवेदन करना चाहूंगा, बहुत सारे प्रतिभागी कंफ्यूज हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे सेंटर के द्वारा बहुत सारे कार्य लगातार हो रहे हैं, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसमें किया था कि नहीं किया था। वो हो क्या रहा है कि हमारा कॉन्फ्रेंस होना है 15, 16, 17 अप्रैल को, वो अभी समय है उसमें। तो अभी जो चल रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और आईकेएस पे ही एक कॉन्फ्रेंस होना है हाइब्रिड मोड में 15, 16, 17। उसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ आपका नाम नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको समझिए, परेशान ना हो। फिर भी अगर आप सेशन अटेंड करना चाहते हैं, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप अटेंड करिए, अपना स्क्रीनशॉट लेके रखिए, लास्ट डे पे आप उसे मेल कर दीजिएगा, हम लोग वेरीफाई कर लेंगे सत्र वाइज, और अगर लगेगा कि आपकी उपस्थिति 100% रही है तो डेफिनेटली आपको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट एक फॉर्मेलिटी होती है, और हम नहीं चाहेंगे कि किसी का भी रुके जो लोग नियमित अटेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया है नियमित अटेंड, तो फिर क्षमा चाहेंगे, इसके लिए आप लोग खुद भी परेशान होंगे और हमें भी परेशान करेंगे। वैसे हमें उतनी परेशानी होती नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा आपको मना करते हुए। रही बात अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारी टेक्निकल टीम है, अब चैट बॉक्स में आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस हैं, लेकिन अब वहां वो डालेंगे, जो उसमें आप लोग अटेंडेंस पे क्लिक करिए, बने रहिएगा, क्योंकि अभी धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया होगी, वो सबसे बढ़िया है। धन्यवाद लिए बिना मत जाइएगा, वो फ्री में मिलना है, ठीक है। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं चाहूंगा कि हेमलता मैडम, जो हमारी मीडिया प्रभारी हैं विदुषी अरुंधति भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र की, उनसे निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए आभासी मंच से। हमारे जो आज के वक्ता हैं, आज के जो उपस्थित प्रतिभागी गण हैं, उन सभी के प्रति आभार प्रदर्शित करें, उन्हें धन्यवाद दें। अजय सर, आप चले गए नमस्कार। संभवतः। जी मैं नमस्कार हूँ। सर। आदरणीय मुख्य अतिथि, माननीय हमारी प्रिंसिपल मैम, सम्माननीय वाइस प्रिंसिपल मैम, नोडल अधिकारी एवं विशिष्ट अतिथिगण तथा मेरे प्रिय साथियों एवं श्रोतागण, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं मुख्य रूप से बताना चाहती हूँ कि मुझे अत्यंत गर्व और सौभाग्य का अनुभव हो रहा है कि मैं भारतीय ज्ञान परंपरा की खोज को समर्पित इस अद्भुत समारोह के समापन पर औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार शर्मा सर के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, जिनके मुख्य भाषण ने एआई प्रासंगिकता को उजागर किया और उन्हें एक अधिक संतुलित और मानवीय भविष्य की ओर ले जाने वाले मार्ग को हमें दिखाया है और प्रशस्त किया। मैं सर को फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उनके द्वारा प्रेरित जो अनुप्रयोग है, एआई की जो अंतर्दृष्टियां हैं, उन्होंने हमारे जीवन में किस तरह से उनको जोड़ा है, ज्ञान को समृद्ध किया है, और जैसे कैसे कैसे ये जो एआई है वो शिक्षा के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और समग्र जीवन शैली के क्षेत्र में आज जो है निरंतर फल फूल रही है, इन सबको पलों को हमें उजागर किया है। मैं हमारे आदरणीय एवं पूजनीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर हरितमा चोपड़ा मैम के प्रति अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने निरंतर आशीर्वाद, ज्ञान व प्रोत्साहन और दूरदृष्टि के पल के पीछे के मार्ग को हमें प्रशस्त किया है और शक्ति प्रदान की है। उनके अटूट समर्थन ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे कार्यक्रम न केवल साकार हो बल्कि एक स्थायी और गहरी प्रभाव को भी छोड़े। इसी क्रम में मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मैम और प्रोफेसर ज्योति सिंह मैम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने ज्ञान एवं प्रोत्साहन से हमें सदैव ऊर्जा प्रदान की। उनकी सदैव हमें उपस्थिति हमें ये याद दिलाती है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली केवल संरक्षण एवं संवर्धन के केवल मात्र अकादमिक प्रयास मात्र नहीं है, बल्कि एक पवित्र दायित्व भी है। मैं अपने नोडल अधिकारी प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिनके सूक्ष्म प्रयोजन और समर्पण ने
इस कार्यक्रम के निर्बाध, सफल और आयोजन को सुनिश्चित किया है। साथ ही आयोजन समिति, IKS की टीम और उन सभी अदृश्य हाथों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आपके प्रयासों ने आज के इस कार्यक्रम को न केवल संभव बनाया है बल्कि इसे अविस्मरणीय भी बना दिया है। विशेष रूप से सराहना के पात्र जो हैं हमारे विशिष्ट श्रोतागण हैं, विद्वान जन, विद्यार्थीगण एवं जिज्ञासु जन हैं, जिनकी एकाग्र उपस्थिति और विचारपूर्ण सहभागिता इस तथ्य को पुष्ट करती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा AI इत्यादि जो है केवल मात्र पुस्तक इत्यादि पांडुलिपियों में ही सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों के मन और हृदय में भी रूप से विद्यमान है, जीवंत रूप से विद्यमान है, जिनका वे वास्तविक रूप से सम्मान भी करते हैं। जैसे जैसे हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, आइए आज इस चर्चा के मूल भाव को आगे बढ़ाएं। और ज्ञान तभी सबसे अधिक ऊर्जावान होता है जब उसे साझा किया गया और संरक्षित किया जाए और उसे व्यापक जनहित के लिए उपयोग में लाया जाए। आइए हम अपनी विरासत का सम्मान करना जारी रखें और विरासत का सम्मान करते हुए AI इत्यादि के जो ज्ञान है उसको बुद्धिमत्ता का पोषण करें और ये सुनिश्चित करें कि भारतीय चिंतन की जड़ें सुदृढ़ बनी रहें, क्योंकि ये वैश्विक सभ्यता को भविष्य की ओर फैल रहा है। अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मैं अपने प्रत्येक जन को, यहाँ पर जो विद्यमान है और ऑनलाइन माध्यम से या YouTube माध्यम से जो जुड़े हुए जन हैं, उन जनों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का पुनर्खोज और पुनर्दृष्टि और AI की यात्रा को आप सभी हिस्सा बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इन पंक्तियों को कहना चाहूंगी, अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा अमृतगम्य। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत बढ़िया हेमलता मैडम, हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत बढ़िया से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। देखो, जो लोग चले गए वो इतने बढ़िया जो धन्यवाद ज्ञापन था उससे वंचित रह गए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सत्र में जितना विद्यमानता जरूरी होती है उसी तरह से अंतिम समय तक, जब तक सत्र समाप्त हो जाए, वहां बने रहें। कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती है। जैसे सर ने अभी अपने PPT शेयर किया, आप लोगों ने संभवतः देखा नहीं देखा, उन्होंने इसमें अपना PPT शेयर कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसको आत्मसात करेंगे और अपने एकेडमिक रिसर्च में उसका उपयोग करेंगे। कल के लिए एक सूचना छोटी सी और रह गई थी। कल 2 सत्र होने हैं। पहला सत्र 6 बजे से शुरू होगा, 7:30 बजे नहीं होगा, 6 बजे से होगा। वो बड़ा सत्र है, वो स्टेटिकल टूल्स पे है। दूसरा सत्र है ऐसे साइंस के तमाम प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें साइंस में नहीं मिलता, साइंस वहां चुप हो जाता है। उन सब का उत्तर, जैसे आज एक बच्चे ने संस्कृत को लेके किया था, वो संस्कृत के माध्यम से कैसे दिया जा सकता है, विशेष तौर से सनातन धर्म परंपरा में उसके उत्तर क्या हो सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। उसमें अमेरिका से हमारे साथ अष्ट मिश्र सर जुड़ेंगे। वो इसमें बहुत बढ़िया काम किए हैं। संस्कृत के ज्ञाता तो हैं ही, साथ ही उनको मनोविज्ञान का भी बहुत अच्छा ज्ञान है और उनको साइंस का भी बहुत बढ़िया ज्ञान है। और अमेरिका में बेसिकली वो डॉक्टर या इसके रूप में कोई कार्य करते हैं, लेकिन उनका सनातन धर्म के प्रति जो रुचि है वो हम लोगों को निश्चित तौर पे सुनना चाहिए और उनके ज्ञान से अपने आप को अपलावित करना चाहिए। तो कल के दोनों सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, बड़ा हो जाएगा। आप लोग कल फ्री रखिएगा, संडे का दिन है संभवतः, हाँ संडे ही है कल। तो आप लोग उसमें उपस्थित रहें और अपने प्रश्न जो भी होंगे आपके दिमाग में उसको जरूर वहां पे रखें। कल के सत्र में आप सभी का आह्वान करते हुए आज का जो सत्र है यही मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। अजय शर्मा को पुनः सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमेशा की तरह इनका व्याख्यान आज भी बहुत ही बढ़िया रहा और उन्होंने, आपने देखा है, हर चीज के बारीकी को लेकर के आपके सामने AI टूल्स को ले आए। आगे फिर भी हम चाहेंगे अजय शर्मा सर से कि अभी ये हमारा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ है IKS की तरफ से, तो ये अनवरत जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है आगे भी इनका आशीर्वचन और ऐसे ही ज्ञान वर्धन हमारा करते रहेंगे। और एक अच्छी सूचना बड़े गर्व के साथ आप लोगों को देना चाहूंगा, AI के जमाने में आप लोग गूगल में जाना, गूगल AI से सर्च करना वैक IKS, तो सबसे ऊपर हमारे सेंटर का नाम आएगा। इतने कम समय में हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको कार्य किया है और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोगों के सुझावों से निरंतर यह केंद्र आगे बढ़ रहा है। जिसकी जो उपलब्धि हो, जो योग्यता हो, आप सब हमें सूचित करें। आगे हम सब आपको, अभी आप वक्ता श्रोता के रूप में हैं, हम चाहेंगे कि आप सभी कभी न कभी हमारे सेंटर में वक्ता के रूप में भी जरूर उपस्थित हो। तो इन्हीं वचनों के साथ, चूंकि 9 बज गया है, फिर वही मैं कहूँगा, डिनर का टाइम हो गया है सबके लिए, तो आप लोग जाएं अपना डिनर करें। जो लोग यहाँ हैं, आज फिर आह्वान करूंगा, आसपास में हैं तो आके ज्वाइन करें। हम होस्ट अच्छे हैं,
कभी मौका मिलेगा तो आप लोग देख लेंगे। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में। कल आप लोग थोड़ा समय जरूर निकालें, दोनों सत्र बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों में उपस्थिति अनिवार्य है। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। धन्यवाद अजय सर, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते सर।